Hello student, welcome in the science video. Student, already we have completed our fifth lesson. Structure of matter. In this lesson we have discussed about what is the matter, then what is meant by atom, which is the smallest particle of matter, then what is the structure of nucleus contains proton, neutron and electron revolve around its nucleus. Second point, elements near about 117 elements are known. Then according to Big Bang theory of the universe originated approximately 14 million years ago from a violent explosion of very small concentration of matter, extremely high density and temperature, and during the formation only the lightest elements hydrogen and helium are formed along with a small amount of lithium and beryllium. This is the answer of E2. What is Big Bang theory and what is the Big Bang theory? Big Bang theory, the theory about the universe originated, and approximately according to Big Bang theory 14 billion years ago from a violent explosion of very small concentration of matter of extremely high density and temperature. During the formation only the lightest elements hydrogen and helium are formed along with a small amount of lithium and beryllium. Next point, symbol of elements. In chemistry, instead of writing a full and lengthy names of elements, certain symbols are used to represent them. Means hydrogen H, nitrogen N, carbon C, this type of. And some elements, means if the two elements begin with the same letter, then the second letter is also used, but it is written in small letters. For example, nickel, Ni, then calcium, cobalt, Co, this type. In previous video, we have discussed about the properties of elements, then what is the compound, how it is formed, then mixture, then some in the table some compounds and their formulas, elements, symbol and valency also. And today we are going to start how writing of formula. We can write the formula of compound if we know the symbol of the elements and radicals it is made up of,
and the valencies of the elements and the radicals it is made up of. The steps involved are: write the symbol of the element and radical side by side. Write their valencies on top as superscript of their symbols. Divide by any common factor in their valencies. Interchange the number of 10 and write them at the base to get the formula. Properties of compound. They consist of atoms, two or more different elements bond together. मीन्स कंपाउंड में 2 एटम्स होते हैं या तो ज़्यादा भी हो सकते हैं और उनकी डिफरेंट एलिमेंट्स बॉन्डिंग होती है टुगेदर एंड मेक अ compound. They can be broken down into simple substances by chemical means but not by the physical means. मीन्स अगर उनको ब्रेक डाउन हो सकते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस उनसे बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको केमिकल they can be broken down into simpler substances by chemical means not by the physical means. मीन फिजिकली नहीं हो सकता ब्रेक डाउन उनका, बट इट इज़ ब्रेक डाउन सिंपलर सब्सटेंस कन्वर्ट होते हैं बाय द केमिकल प्रोसेस यूज़ करनी पड़ती है. प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपोनेंट elements and also contain the same ratio of its component atoms. मीन जब भी वो ब्रेक डाउन होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज रहती है डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपोनेंट एलिमेंट एंड also contain the same ratio of its component atoms. इसके पहले भी हमारा डिस्कस हुआ था कि जैसे हमने वाटर या सोडियम क्लोराइड मीन्स सॉल्ट एग्जाम्पल दिया था कि अगर जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंपोनेंट एलिमेंट्स. उनमें जो हमने एलिमेंट यूज़ किए हैं कंपोनेंट एलिमेंट्स मीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर द वाटर, बट उनका जो रेशियो रहता है वो उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है. जैसे कि हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में है, ऑक्सीजन भी गैसेस है, बट जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वाटर बनता है. बट द वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ है कि वो लिक्विड फॉर्म में है, बट उनमें जो परसेंटेज रहते हैं जैसे कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 1 एटम, तो वो जो प्रपोर्शन रहता है कंपोनेंट एटम्स इज द सेम रहता है, उसमें कोई भी डिफरेंट नहीं होता. अंडरस्टूड. व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड? दे कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स बॉन्ड टुगेदर. एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं इन द कंपाउंड. Then they can be break down into simpler substances by the chemical means. Means if the compound we have to break down, it is simpler substances with the help of chemical process, not a physical process. Properties are different from its components. Elements always contain the same ratio ऑफ इट्स कंपोनेंट एटम्स, और जो प्रोपोर्शन रहेगा वो सेम रहेगा
रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट। हियर सम क्वेश्चंस टेस्ट योर नॉलेज। फर्स्ट, व्हाट आर कंपाउंड? What is mean compound? Compound is a pure substance formed by the combination of two or more elements in fixed proportion. A compound is a pure substance formed by the combination of two or more substances in fixed proportion is called compound. For example, sugar and common salt is an example of compound. What is a chemical formula? What is chemical formula? Chemical formula is a combination of symbols of elements and subscript number are used to show the composition of a compound. A chemical formula is a combination of symbols of the elements and subscript numbers are used to show the composition of compound. For example, H2O, NaCl, CO2 in carbon dioxide. Third question, write the chemical formula of calcium carbonate, sodium bicarbonate, silica and methane. What is the formula? Calcium carbonate, सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला है CaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सिलिका SiO2 and methane CH4. कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सिलिका SiO2, मीथेन CH4. Second important point in this lesson, mixture. Mixture is obtained when two substances are combined in such a way that no chemical reaction occur between the component, and you can separate them again by the physical method. The substance can be mixed in any proportion by weight. For example, sand and water, sugar and water, salt and water. Means in compound it's a fixed proportion, but in the mixture the components, two substances are combined in such a way no chemical reaction occur between the component, and the substance can be mixed in any proportion by weight. मीन्स उसका प्रोपोर्शन नहीं रहता, जैसे कि हमने कंपाउंड में देखा था कि उसमें फिक्स प्रोपोर्शन रहता है, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम्स,
is equal to H2O, but in the mixture substance can be mixed in any proportion. Sand, water, sugar and water, salt and water, these are the example of mixture. Properties of mixtures: it consists of two or more different elements or compound physically mixed together. It can be separated into its component by physical method. Retain many of the properties of its components. मीन्स यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज फर्स्ट है कि इसमें ये हम फिजिकली उसको मिक्स किया जाता है. फिजिकली कोई केमिकली मेथड यूज़ नहीं की जाती. जैसे कि हमने शुगर और वाटर लेते, शरबत बनाते, शुगर एंड वाटर मिक्स करते हैं. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर. तो उसमें कोई भी केमिकली मेथड नहीं है, फिजिकली हम एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं. और हम उसको सेपरेट अगर हमको करना है तो भी हम उसको फिजिकली मेथड से ही आप उसको सेपरेट कर सकते हो. सेकेंड, थर्ड, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है मिक्सचर की, कि उसके जो प्रॉपर्टीज़ रहती है, शुगर की प्रॉपर्टीज़ जैसे कि स्वीटनेस है, तो आप अगर शरबत पीते हैं तो आपको स्वीट लगता है. लिक्विड फॉर्म में है वाटर, तो आपको शरबत भी लिक्विड फॉर्म में मिलता है. उसकी जो प्रॉपर्टीज़ रहती है वो सेम रहती हैं एज इट इज़ इन द मिक्सचर. हियर some activities. Let's study the difference between the components and mixture by performing an activity. Activity 1. Let's mix two elements, sulfur and iron. Sulfur is in the form of yellow powder and iron in the form of grey iron filling. The two substances retain their colors and properties. We can separate iron filling by the rolling a bar magnet through the mixture. And since iron is a magnetic material, iron fields are attracted towards the magnet and sulfur is लेफ्ट बिहाइंड. ये एक्टिविटी यहाँ पे हमने सल्फ़र एंड आयरन मिक्स किया है. ये फिजिकली किया है यहाँ पे. तो अगर हमको सेपरेट करना है तो आयरन फीलिंग जो होती है, इट्स अ मैग्नेटिक मटेरियल. आयरन इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल, अट्रैक्ट होता है मैग्नेट. तो अगर उसमें से हमने मैग्नेट यूज़ करते हैं तो जो आयरन फीलिंग्स होती है वो उसको अट्रैक्ट हो जाएगी. आयरन फीलिंग होगी तो वो सेपरेट की जाती है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट और सल्फर इज लेफ्ट बिहाइंड. एंड द एक्टिविटी शो दैट द आयरन एंड सल्फर हैव नॉट रिएक्टेड केमिकली. वहाँ पे हमने रिएक्शन नहीं हुई है sulfur and iron की. This mixture of iron and sulfur can be separated by the physical method only. Means जो हमने मैग्नेट का यूज़ किया for separating the iron filling, it is a physical method. With the help of physical method we have separate iron from the sulfur and mixture of sulfur and iron. If a mixture of iron filling and sulfur
is heated, the iron react with sulfur and form a new compound called iron sulfide. अगर उसको गर्म किया जाता दोनों मिक्सचर को, आफ्टर द हीटिंग आयरन रिएक्ट विथ सल्फर और न्यू कंपाउंड बन जाता था आयरन सल्फाइड. द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन सल्फाइड is different from the components and it is not a magnetic material. और अगर हमने उसको सल्फर आयरन सल्फाइड इट्स अ डिफरेंट कंपोनेंट बन जाता और इट इज़ नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल. मीन इन दोनों से जो कंपाउंड बनता है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ उसकी रहेगी और उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले जैसे आयरन मैग्नेटिक था ये ऐसा नहीं रहेगा. And the compound of this new compound can only the separate by the chemical methods. अगर केमिकल रिएक्शन हो जाती हैं और दस आयरन कैन नॉट बी सेपरेट बाय द यूजिंग मैग्नेट. और हमने जब दोनों की रिएक्शन होती है आयरन सल्फाइड बन गया तो आयरन हम ऐसे इजीली उसके फिजिकल मेथड से उसको सेपरेट नहीं कर सकते. उसके लिए केमिकल मेथड ही यूज करनी पड़ेगी बिकॉज इट इज़ अ कंपाउंड और कंपाउंड जो होते हैं इजीली सेपरेट नहीं होते और मिक्सचर इजीली हम उसको सेपरेट कर सकते हैं. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड. टाइप ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, homogeneous and heterogeneous. Homogeneous mixture have same composition. The components of such a mixture are not seen easily. When two substances are mixed, it form a solution. The sugar solution is the homogeneous mixture as the components are not seen. Other example of homogeneous mixture are air and sea water. Homogeneous mixtures have the same composition and the compounds such are not seen easily. Means उसमें आपको कोई भी particles नहीं दिखेंगे. Small particles एक बार मिक्स जब होता है होमोजेनियस मिक्सचर तो पार्टिकल्स नॉट रिमेन एट द बेस में आपको कुछ पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, पूरे डिजॉल्व होते हैं पार्टिकल्स. मीन्स शुगर और वाटर, आपको शुगर और कोई पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे इन वाटर. हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स. कंपाउंड ऑफ दिस मिक्सचर्स आर easily visible and can be separated by physical means. Example of heterogeneous mixtures are sand and salt, iron and sulfur, chalk powder in water. मीन्स उसके पार्टिकल्स आप इजीली उसको देख सकते हो क्योंकि वो पूरा डिज़ोल्व नहीं होता. मटेरियल ऐसा रहता है कि उसमें वाटर में कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता. इट इज़ कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. फॉर एग्जांपल सैंड एंड वाटर, sand and salt, iron and sulfur, chalk powder in water. On the page number 58, some question is here. Test your knowledge. What is a mixture? A mixture is obtained when two substances are combined in any proportion. What is mean by mixture?
When two substances are combined in any proportion, it's called mixture. How can you separate the components of a mixture of iron filling and sulfur? We can separate iron filling by the rolling a bar magnet through the mixture, and iron filling are attracted towards the magnet and sulfur is left behind. How can we separate the component from a mixture of iron filling and sulfur? We use the magnet. We can separate iron filling by the rolling a bar magnet through the mixture, and result क्या होगा? Iron filling are attracted toward the magnet and sulfur is left behind. Name the types of mixture and give an example of each type. How many types of mixture? There are two types of mixture, homogeneous and heterogeneous. Homogeneous means mixture have some same composition. The components of such mixtures are not seen easily. Means the substance are mixed, it form a solution बनता है. Second है heterogeneous. The component of these mixtures are clearly visible. For example है salt and sand, iron and sulfur, chalk powder in water. These are the three questions you have to write down in your notebook. Second point which will we now discuss, chemical equation. The elements and compound react chemically and form a new product. This is called chemical reaction. What is meant by chemical reaction? The element and compound react chemically and form a new product. A chemical equation is the symbolic representation of chemical reaction. Let's see and understand it by taking an examples. When sodium combines with chlorine, it forms sodium chloride. It will be easier to understand the chemical reaction through its representation by the chemical equation, which as twice Na plus Cl2 gives out twice NaCl. Means sodium plus chlorine gives out sodium chloride. In a chemical equation, elements and compound react chemically and form a new product. And in chemical reaction, symbolic representation of a chemical reaction. जो भी chemical reaction होती है
उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, सिंबल यूज किए जाते हैं इन द केमिकल रिएक्शन। मीन्स सोडियम तो Na, क्लोरीन Cl, और उसके हाउ मेनी एटम्स यूज, ये उसके लिखा जाता है। The elements or compound that take part in chemical reaction is known as reactants, and the new product compound formed by the rearrangement of elements in reaction is known as the product. In the sodium and chlorine are the reactants, and sodium chloride form as a result of reaction is the product. मीन्स पहले हमने जो इक्वेशन लिया था ट्वाइस Na प्लस Cl इज इक्वल टू ट्वाइस NaCl, दिस इज द केमिकल इक्वेशन, एंड इन दिस इक्वेशन सोडियम एंड क्लोरीन आर द रिएक्टेंट्स, एंड सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ था, it is called a product. Understood? In the chemical equation, a sign of arrow is placed between the reactants and products. Reactants are always right on the left hand side of the arrow, and product are written on the right side of the arrow. Once again I repeat, a symbol of arrow is placed between the reactants and the product. Reactants means हम जिसने पार्ट लिया वो, और जो तैयार हुआ इट्स अ प्रोडक्ट, उसके बीच में साइन होती है एरो की, and reactants are always written on the left hand side, लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है रिएक्टेंट्स को, and product are written on the right side of the arrow. In chemical equation, numbers of atom on the left hand side and the right hand side should be the same. मीन्स दोनों भी साइड के नंबर्स अगर इक्वल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने एक सिंपल सा इक्वेशन लिया है ट्वाइस Na प्लस Cl ट्वाइस NaCl, यहाँ पे सोडियम के 2 एटम्स यूज हुए हैं, क्लोरीन के 2 एटम्स यूज हुए, तो इन प्रोडक्ट में भी 2 एटम्स ऑफ सोडियम and 2 atoms of chlorine is present, and such a chemical equation is called balance equation. What is meant by balance equation? In the chemical equation, number of atoms on the left hand side and the right hand side should be the same. Such a chemical equation is called balance equation. So we have finished all the topic of this lesson, and so we will discuss now some main points of this lesson. Everything in the universe is made up of matter.
हर एक चीज़ जो भी बनी हुई है यूनिवर्स में तो मैटर से बनी हुई है। एटम्स आर मेड अप ऑफ एनी स्मॉल पीसेस नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम्स आर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉलर पीसेस। एटम्स जो बना है बहुत स्मॉल पीसेस से बना है, known as subatomic particles. Atom contains a small dense central core as called the nucleus. What is meant by nucleus? Atoms contain a very small dense central core called a nucleus. Symbol are the abbreviation used instead of lengthy names of elements. मीन पूरा एलिमेंट्स के नाम ना लिख के वी यूज द सिंबल। एब्रीवेशंस यूज होते हैं, फर्स्ट लेटर यूज होता है, सिंबल रिप्रेजेंट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट्स। में एलिमेंट्स के कितने एटम उस मॉलिक्यूल में है वो रिप्रेजेंट करते हैं। एटम्स ऑफ एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स। The number of atoms present in one molecule of an element is called its atomicity. The number of elements present in one molecule of an atom is called its atomicity. Next point, a compound is a pure substance formed by the combination of two or more elements in fixed proportion. The elements of compound cannot be separated by the physical method. Compound physical method से आप उसको separate नहीं कर सकते। A chemical formula is the combination of element, symbol of elements and subscript number and used to show the composition of compound. A mixture is often when two substances are combined in any proportion. जो मिक्सचर जो बनता है तो 2 या 3 सब्सटेंस के कॉम्बिनेशन से बनता है, लेकिन एनी प्रोपोर्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। A chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction. What is meant by chemical reaction? A chemical reaction is the symbolic representation of a chemical reaction. Okay, thank you for watching this video.
elements and compounds. Everything around us, whether it is gas, liquid or solid, is made up of matter. When matter is observed closely, it is seen to be made up of tiny particles called atoms. Atoms combine to form molecules that make up different kinds of substances around us. The molecules that make up matter can be classified as elements or compounds. Let us learn more about these today. Let us use some colored beads to understand how elements are different from compounds. Consider the yellow beads as oxygen atoms, the red beads as hydrogen atoms, and the blue beads as carbon atoms. Let us try to make an oxygen molecule, a water molecule, a carbon molecule, and a carbon dioxide molecule using these atoms. You know that one oxygen molecule is made up of 2 oxygen atoms. So here we go. 1 and 2 oxygen atoms put together, and we have an oxygen molecule. Now the water molecule. One water molecule is made up of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. So we need 1 yellow bead and 2 red beads to make 1 water molecule. This seems interesting. Let us continue to make the carbon molecule and the carbon dioxide molecule. One carbon molecule is made up of 2 carbon atoms. So here is 1 and 2 put together, and we have a carbon molecule. The carbon dioxide molecule, on the other hand, is made up of 1 carbon and 2 oxygen atoms. So here is 1 molecule of carbon dioxide. Here are all molecules we have made so far. Do you notice that the molecules of oxygen and carbon are made up of only 1 kind of atoms? Well, all such molecules that are made up of only 1 type of atoms are called elements. But then, what about molecules like water and carbon dioxide? Well, all such molecules that are made up of more than 1 type of atoms are called compounds. The properties of a compound are different from the properties of the elements that make the compound.